हे गाइस, व्हाट्स अप, दिस इज कोच निक। सो आज हम करने वाले हैं वार्म अप एक्सरसाइजेस जो आप रोज़ कर सकते हैं। आप किसी भी वर्कआउट से पहले कर सकते हैं, जिसके अंदर रहेगा वार्म अप एक्सरसाइजेस एंड प्लस मोबिलिटी एक्सरसाइजेस। वार्म अप एक्सरसाइज आपको हेल्प करेंगी आपके ब्लड को ज़्यादा फ्लो करने में, आपके मसल्स तक ज़्यादा पहुंचाने में। एंड मोबिलिटी एक्सरसाइज आपको हेल्प करेंगी आपके रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाने में। आपकी स्टिफ हो रही जो मसल्स हो रही हैं धीरे धीरे, उसको हेल्प करेंगी ज़्यादा, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखने में। तो हम स्टार्ट करते हैं। वी आर स्टार्टिंग इन 5 सेकेंड्स और स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सर्कल से 5 ईच साइड, स्लो 4 5 एंड दूसरी तरफ 4 5। Very good. Cross arm swings 1 3 5, up and downs 5, hip circles 4 5, counterclockwise 1 2 3 4 5. Very good. Leg swings 2 3 5. Very good. Next 2 4 5. Very good. Next is jumping jacks. We'll do 30 seconds of jumping jacks. 3 2 1. Keep on going. Slow jumping jacks करेंगे हम। Five seconds और 3 2 and done. Great. Next, what we are gonna do, पहले सब देख ले मेरे को, फिर उसके बाद ट्राई करें। पहले हम इंच वार्म करेंगे। इंच वार्म हाथों से चलेंगे, हाथों से फ्लोर पे चलेंगे, पुशअप लगाएंगे, कोबरा पोज के अंदर आएंगे एंड मेक श्योर फील द स्ट्रेच इन योर एब्डोमिनल एंड थ्रोट। अब यहीं से ही कमर को आप ऊपर लेके जाएंगे डाउनवर्ड डॉग के अंदर एंड मेक श्योर आपकी हील्स टच हो रहे हो फ्लोर पे। बैक स्ट्रेट, लेग स्ट्रेट एंड देन अगेन प्लैंक पोजीशन में, और फिर यहाँ से हम वापस आएंगे। चलिए अब इसके 4 रैप्स करेंगे हम। इंच वार्म, पुशअप लगाएंगे, कोबरा पोजीशन 2 सेकंड का होल्ड करेंगे, डाउनवर्ड डॉग पोजीशन, यहाँ भी अगेन 2 सेकंड का होल्ड करेंगे, फिर उसके बाद प्लैंक एंड वापस वॉकआउट। वेरी गुड। 3 मोर। इंच वार्म, पुशअप, कोबरा, 2 सेकंड का होल्ड एंड देन डाउनवर्ड डॉग, बैक टू द प्लैंक पोजीशन एंड वॉकआउट। 2 मोर। कोई जल्दी नहीं है, स्लो करना है। पुशअप, कोबरा, डाउनवर्ड डॉग, प्लैंक पोजीशन
एंड बैक टू द नॉर्मल। खड़े होके वापस वन मोर रैप। अगेन पुश अप, कोबरा टू डाउनवर्ड डॉग, प्लैंक पोजीशन एंड वापस। वेरी गुड। नेक्स्ट इज इंचवॉर्म टू स्पाइडर्स। नेक्स्ट अगेन इंचवॉर्म करके जाना है। एक पैर लेफ्ट लेग हम आगे लेके आएंगे हाथों के पास में और ग्रोइन को नीचे प्रेस करेंगे 2 टाइम्स, 1 2 एंड देन विल स्विच द लेग। अगेन नीचे प्रेस करेंगे 1 2। मेक श्योर जो आपको पीछे वाला पैर है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहे और जो आपका नी और शोल्डर है वो करीबन पास रहे। 1 2 5 each side, 2 3 4 One more, guys. Very good. And वापस। Very good. Next is squats to reach and hip raise. हम स्क्वाट करेंगे। स्क्वाट, इसी पोजीशन के अंदर हाथ नीचे ऊपर की तरफ देखेंगे। 1 and then hold your toes और lift your hips and make sure आपके legs straight हो यहाँ पर। and this is 1 rep। उसके बाद खड़े हो जाएंगे। 4 और करेंगे। स्क्वाट, हाथ नीचे, हाथ ऊपर, hold your toes and lift your hip। 2, very good। 3 more। Hold your toes, lift your hip and squat। Last 2। And last one। Very good। Good। Next is sit down on your knees, then child pose। चाइल्ड पोज के बाद 2 सेकंड बैठेंगे, फिर उसके बाद अपना टेबल टॉप पोजीशन के अंदर और हाथ दूसरी तरफ लेके जाना है एंड मेक श्योर आपका शोल्डर फ्लोर पे टच हो। 2 सेकंड का होल्ड करेंगे एंड देन विल अगेन स्विच। 5 each side, 1 2 3 2 more। four, last one। Very good। बहुत अच्छे। तो ये एक्सरसाइज आप हर रोज करें, आपके इससे रेंज ऑफ मोशंस बढ़ेंगे, आपकी मसल्स रिलैक्स होंगी, फ्लेक्सिबल थोड़ा सा और होंगी और वर्कआउट के टाइम पे आप ज़्यादा परफॉर्म कर पाएंगे। आपकी मसल्स स्टिफ नहीं रहेगी, आपकी बॉडी स्टिफ नहीं रहेगी। सो थैंक्स फॉर द डे गाइज।
और अगर आप लोग न्यू हैं तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे रोज़ जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एंड सी यू टुमारो गाइस, बाय बाय, टेक केयर।